Hey everyone, welcome to another episode of Primary Market Chatter. This is the December first week IPOs episode brought to you by Sunday Investing. So what we are going to do is that we'll be talking about 5 companies today that are coming in with their IPOs for next week. On the Mainboard side, we have Suraksha Diagnostics, and then on the SME side, we have 3 SMEs and then a SM REIT which is coming. So 3 SMEs, Nifco Finance, Agarwal Glass, and Ganesh Infra are coming in next week. And then we have Property Share, which is a SM REIT, which is coming. So we'll talk about all of them. But before we get started, just want to highlight a few basic disclaimers. By the way, you would have seen Rohit is unfortunately unable to make it to this episode, so he won't be joining. But yeah, other than that, a few standard disclaimers. We are not SEBI registered research analysts. So do not please take anything on face value. Definitely do your own due diligence as well. And do not think of it, what we say as a apply or a no apply recommendation. What we just do is try and talk about the company from our REIT. What do we think about the company and what we think we like in the company or dislike in the company. Second thing, and again, this has been said probably a number of times before as well, but if you don't listen to the space, we put them on our YouTube channel as well. So definitely go ahead and follow the YouTube channel, the link to which is in the pinned comments. तो वहां पे जाके आप YouTube चैनल पे एक IPO का रिव्यू अपने पेज पे अपने हिसाब से सुन सकते हैं. So with that, maybe we are good to get started. I'm just seeing how many people, slight shortage of people, the number slightly lower than what it usually is, but yeah, maybe it will pick up over time. So what we'll do is we'll probably start with, just want to set it up, we'll start with Property Share SM REIT. And then we will move to Suraksha Diagnostics, which is the Mainboard IPO, and then probably cover the 3 SMEs. SMEs has a lot of interesting names this time. So all of them are big size as well. So definitely stick around till the end. Should be interesting. But yeah, with that, let me quickly get started on SM REIT, which is coming, which is Property Share. So maybe just highlighting a few things to start with. So to explain to everyone what REIT is, REIT basically are real estate investment trusts. They are like owning a real estate, just that you have fractional ownership. जैसे अपन ने एक building ली, but it is too expensive, right? So what you do is you buy units of that building, and there are a few listed REITs on the market already, like Embassy, Mindspace. What this one is a SM REIT. What SM REIT stands for is a small and medium REIT. So basically जैसे Mainboard था, उसके बदले में SME बना जहाँ पे छोटी कंपनीज आई, वैसे ही SEBI had brought in a regulation earlier this year to also allow listing of small and medium REITs, where people could probably just target niche properties and उसमें REIT का वो लोग list करा के benefit ले सकें. So definitely an interesting concept. So this essentially allows to get niche properties जो कि specific properties हैं, उनकी ownership में हम हिस्सा ले सकते हैं. अब जैसे मैं इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शेयर REIT की बात करूं, तो बहुत ही कम यूनिट होल्डर हैं. देयर आर गोइंग टू बी 3361 यूनिट होल्डर्स. 3300 यूनिट होल्डर होने वाले हैं, 3300. एंड एवरीवन, द टिकट साइज इज 10.5 lakh rupees. Like the minimum unit is 10.5 lakhs. That is what one has to put in. And then it will be traded across. And what you do get is, like, think of it this way. Maybe I'll then explain first about Property Share company assets. So the company Property Share is a tech-enabled alternate investment fund started by Kunal Kongton, who's an Ahmedabad guy. And basically what the company does is it allows for fractional ownership and is probably one of the earliest starting fractional ownership platform in India. इसमें क्या होता है basically, आप एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने की जगह उस एक प्रॉपर्टी वो लेंगे जिसमें 10 हिस्सेदार होंगे और आपको एक वो यूनिट मिल जाएगी, जैसा मैंने बोला. सो इसमें भी जैसे ये कंपनी है 353 CR ये रेस करने की कोशिश करी, तो इसका कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है सच. सो इस 353 CR से कंपनी क्या करेगी, इट विल बाय अ प्रॉपर्टी प्रेस्टीज टैग प्लेटिना ऑन आउटर रिंग रोड ऑफ बैंगलोर. आउटर रिंग रोड ऑफ बैंगलोर है, उसमें ये प्रॉपर्टी जो है ये 2016 से ऑलरेडी रेंटेड आउट है. उनसे ये प्रॉपर्टी ले लेगी वो 353 CR, उसका कॉस्ट है प्रॉपर्टी का. और उसके बाद ये रेंटल यील्ड जो मिलेगा उसमें से एक्सपेंसेस काट के अपने
जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको एज डिविडेंड पास ऑन कर देगी. सो आरईआईटी इज लाइक कि आपको रेंट जो मिल रहा है वो डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है, और जो आपका प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी उससे आपका यूनिट प्राइस एप्रिशिएट होगा. दैट इज द meaning behind per se how you like look at these REITs. But again, this is a SM REIT. So the government wanted to make sure that only very like institutional or semi institutions participate in it who understand the nuances behind this. That's why the ticket size is kept very high of 10.5 lakhs. अब अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया प्रेस्टीज की, प्रेस्टीज टेक प्लेटिना, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें उन्होंने ऑलरेडी रेंटेड आउट है. सो ये उनसे 2.5 लाख स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी जो है ओवर 6 फ्लोर्स ग्राउंड टू फिफ्थ, वो उनसे खरीद रहे हैं 350 सीआर में, जो कि ऑलरेडी यूएस की टेक कंपनियों को रेंटेड है. और वहां से उनको रेंट मिलता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगभग 100 रुपए के हिसाब से. लाइक द एवरेज रेंटल यील्ड इज 103 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड लॉक इन भी है 4.5 साल का. सो इट्स अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ इनकम की जो अपना टेनेंट है वो छोड़ के नहीं जा सकता 4.5 साल तक का, और टेन्योर जो है वो 9 साल का है, तो कंपनी को अगले 9 साल तक के लिए रेंट आता रहेगा. तो जैसे अब अगर इसकी कैलकुलेशन करनी होगी रफ की ये कितना सस्ता आ रहा है कितना महंगा आ रहा है, तो रेंटल यील्ड लगभग 1200 रुपए राइट साल की, क्योंकि 100 रुपए महीने की है. तो 1200 रुपए की रेंटल यील्ड के हिसाब से लगभग 7% रेंटल यील्ड माने अपन, तो उस हिसाब से एसएफटी रेट आएगा लगभग 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट. बट व्हाट नीड्स टू बी सीन इज दिस इज द बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, बट व्हाट इज द रेट ऑन आउटर रिंग रोड एट दैट एरिया विच बिकम्स वेरी कम्बरसम टू अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या रियल एस्टेट का रेट चल रहा है. तो अगर आप 17,000 रुपए रेट के हिसाब से मानते हो, तो जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस हिसाब से इनका प्राइस जो ये ला रहे हैं वो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी डू द कैलकुलेशन एंड द कैलकुलेशन समवेयर. Yeah, so at that price, the company is bringing in इनका जो एसएफटी है वो 250 लाख, जैसे मैंने 2.5 लाख स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से ये इनका जो प्राइस आता है वो लगभग 423 सीआर आता है इस प्रॉपर्टी का. बट अब एक्चुअली में देखना ये 353 में मिल रही है, तो देयर सीम्स टू बी सम डिस्काउंट, बट नीड्स टू बी फाइंड आउट कि उस जगह पे स्क्वायर फीट रेट क्या है. अब इसमें अच्छी बात यह है कि लगाना है कि नहीं लगाना है, लाइक स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू फ्लिप, there is usually some very minimum gain in REITs, but it's a risky product. So definitely keep that in mind, especially because it's a big size product. The good part is, इसमें जो 3,000 units हैं, 75% of it will be QIB, 25% would be HNI. So figure out what is the QIB interest like. Apply only and only if there is a overwhelming QIB interest. Otherwise, do not apply. That is what my strategy is going to be. But REITs in usually think of it as a long-term product, as a replacement to real estate. These are not your traditional companies which grow exponentially. This is more of a like buying a unit of a building. तो जैसे ये जो प्रेस्टीज टेक पार्क है, इसकी 3,000 ओनर है, उनमें से अगर आपके पास एक है तो आप एक वो ओनर हो. So that's how you think about this REIT. That is all I had to cover. Anything that Tanmay, Yash, you guys have to add, or we can probably move to the main show where we talk about the Mainboard and the SME IPOs now. सर मैंने ज्यादा पढ़ी हुई नहीं है, सो मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा उस पर. Perfect. With that, maybe let's move forward and talk about Suraksha Diagnostics. एक बार Suraksha Diagnostics की तरफ move करते हैं. So just to set it up for Tanmay, Suraksha Diagnostics offers pathology, radiology and medical consultancy services, and as a central reference laboratory with 8 satellite laboratories spread across east of India, mainly in West Bengal, Bihar, Assam and Meghalaya. So it's a Kolkata based company. अब अगर मैं कंपनी की कुछ IPO की डिटेल्स की बात करूं तो it's a 850 CR IPO, around 846 CR to be specific, and all of it is a offer for sale, i.e. no growth capital is being raised by the company and everything is being cashed out by the promoters. The market cap at which it is coming is 2,300 CR approximately. And in terms of the financials,
On FY24, the company did 222 crore revenue and a bottom line of 23 CR. 23 CR उन्होंने पैड किया था last year में. And so उस हिसाब से at a very high level, the PE might seem slightly high, but this is not the traditional metric which you should be using in order to value this company. Maybe Tanmay will talk about when he comes to this. In terms of the LMs, ICICI, Novama and SBI Capital are the LM for this IPO. So with that, Tanmay, do you want to go ahead and talk about Suraksha Diagnostics? सर इसमें वॉइस क्लियर? Yes. So Suraksha Diagnostics Limited is a Kolkata-based integrated diagnostic chain which is engaged in pathology, radiology and medical consultation services. मतलब ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं स्पेशली फॉर द B2C कस्टमर्स. इनका B2C में से 4-5% रेवेन्यू. मेजरली कस्टमर्स कम एट देयर सेंटर्स एंड गिव द टेस्ट like X-ray, ultrasonography, tomography, magnetic resonance imaging, vaccination services. So this company has 8 satellites laboratories, 49 diagnostic centers, 166 sample collecting centers and 215 customer touch points. Okay, तो see now what is this? So this company operates in a hub and spoke model. मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर सेटअप करते हैं which is company owned, company operated, and then they distribute the collection centers via franchisees. Okay, मतलब एक बड़ा सेंटर रहेगा, उसके आजू बाजू 10-15 अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स रहेंगे. सो ये जो सैंपल कलेक्टिंग 166 है एंड कस्टमर टच पॉइंट्स है, दीज आर मेनली फ्रेंचाइज. एंड व्हाट दिस 49 डायग्नोस्टिक सेंटर्स आर, दे आर कुको कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स. अगर मैं आपको जोग्राफिकल ब्रेकअप दूं तो आई थिंक दे हैव सेड दैट वी आर प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, बट आउट ऑफ द 49 डायग्नोस्टिक सेंटर्स 46 are in Bengal and one each. One is in Bihar, Patna, one is in Assam and one is in Shillong, Meghalaya. So technically this is an almost a Kolkata based or a West Bengal based company only. Okay, 96% revenue, 96.5% revenue comes from West Bengal. Okay, I'll just tell the scale of the business. The company manages and almost 30,000 pathology samples and 5,000 scans per day. Okay, per day 30,000 pathology samples and 5,000 scans. So this company is raising 846 crores completely and OFS, out of which I think 55% OFS is done by their private equity fund Orbimid. They took the equity in the company in two different slabs. One was in 2017 and second was in 2020. Their vetted aggregative cost of acquisition is roughly for 94 rupees, and now they are encashing their stake. They're selling almost I think 22% out of the 32% holding at 441 rupees per share. मतलब almost 4.5 गुना का रिटर्न मिल कर 7 साल में. Okay. So the company did a revenue of 109 crores in FY23, EBITDA of 47.5 crores, and PAT just 6 crores. But in FY24, the revenue grew by 21% to 218.7 crores, EBITDA of 73.6 crores, and PAT 20 crores. They have also reported the key numbers. Revenue was at 67 crores, PAT was at 7.7 crores. Okay, so the company or the management has said that we are aspiring to increase our 49 diagnostic centers to 100 in next 3 years, all by their hub and spoke model only. And the spokes will be of course franchises. And I'll share some issues related to the company. फिर मैं valuation part पे आता हूँ. पहले बात तो CRISIL has downgraded their credit rating 2 times. Okay, so this question was asked to the management. They replied, first of all, why it was downgraded, because the issuer or who is issuer, Suraksha Diagnostics, is not cooperating with CRISIL. What management answered was कि हमारे बुक्स में से 5-5.5 करोड़ का डेट है और we are not intending to raise any kind of debt in the near future, so we are not giving all the details to the CRISIL rating. मतलब honestly I understand कि यार आप डेट नहीं लेना चाहते हो इसलिए आप मतलब दैट्स ओके, बट आपने अगर क्रिसिल को डेटा दे दिया तो उसमें गलत क्या है? आई थिंक उसकी वजह से आपका रेटिंग 2 बार डाउनग्रेड हो गया जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर डिटेल्स टू द क्रिसिल व्हिच वाज पब्लिकली अवेलेबल इन द एमसी. ओके, तो आई थिंक दैट वाज नॉट, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्ट मेस विद द क्रिसिल. आई थिंक आपने डिटेल्स दे देने चाहिए थे. Second thing was, I think there are small 3-4 litigations against the promoters and the company. I think nothing of them is actually material, very small portions. And one was the geographical concentration.
एक चीज मैंने देखा कि यार वी आर सेइंग दैट दे आर बेस्ड इन वेस्ट बंगाल, बट एक्चुअली दे आर बेस्ड इन जस्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स और टू रीजन्स ओनली. एक्चुअली दे आर नॉट इवन अ वेस्ट बंगाल प्लेयर. Their 51% revenue comes from North 24 Parganas, which is a region of I think 4 districts in West Bengal, and the 24% revenue solely comes from Kolkata. मतलब 75% रेवेन्यू आपको कोलकाता से आता है, एंड वन मोर दे हैव इज साउथ 24 परगनास, उसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% आता है. तो आप रफली रफली 80-82% आपका रेवेन्यू सिर्फ 3 रीजन से आता है. मतलब यू आर नॉट इवन अ स्टेट लेवल प्लेयर. मतलब एंड दूसरे के जो 3 स्टेट्स उनमें से एक सेंटर सिर्फ एक्सपांशन दिखाने के लिए खोला गया, बट आई थिंक दैट ऑनेस्टली नॉट मटेरियल, बिकॉज शिलोंग से इनका रेवेन्यू नॉट इवन हाफ परसेंट के करीब आता है, जो होता है करीब करीब 1 करोड़ रुपए. तो यार आप एक स्टेट का एक्सपांशन कर रहे हो, उसमें 1 CR रेवेन्यू कर रहे हो, विच इज नथिंग. अब इसके वैल्यूएशन पार्ट पे आता हूँ. दिस कंपनी इज इम्प्लाइंग एन मार्केट कैप ऑफ 2300 प्रिसाइजली, रफली 2300 crores. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट से कि ये जो डायग्नोस्टिक बिजनेस होता है ना, इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा होता है. अभी कोई ये कंपनी को पी पे देखेगा कि दे विल से लाइक यार 23 करोड़ का पार्ट है, 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, 100 का पी है, तो बहुत एक्सपेंसिव है, बिकॉज लिस्टेड पेयर्स तो 50-60 टाइम पे मिलते हैं. तो आई थिंक वैसा नहीं होता ये, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा होता है बिजनेस में. आप जस्ट जस्ट सोचिए कि आप अभी जितने नए सेंटर्स खोलते जाओगे, आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं बढ़ने वाला है. ओके, बट आपका जो जितना भी नया रेवेन्यू बनता रहेगा, उससे आपका एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगा, और वो पैट में बहुत हैवीली रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाएगा. लाइक 2-3 साल में इसका पैट बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा. बट टू वैल्यू दिस बिजनेस वी शुड सी दिस ऑन एन EBITDA बेसिस. आप इसको कैश पैट पे भी देख सकते हो, बट आई फील ये कंप्लीट जो सेक्टर है बाय बिग ब्रोकरेज हाउसेस और बाय बिग बिग एनालिस्ट, दे इसको EBITDA पे देखते हैं, इसको कैश पैट पे नहीं देखते. ओके, तो आई जस्ट कंपेयर कि FY24, सी आई जस्ट टेल द 4 companies which are given in the RHP by the company, and then their FY24 EBITDA I'll tell, and then FY25 का expected I'll say. Dr. Lal Pathology, which is the largest player, it trades at 30 times, 30 times FY24 EBITDA, and FY25 expectedly 26 times. Metropolis trades at 32 times, and in FY25 estimates 27 times. Thyrocare, actually Thyrocare is a very high volume, low margin business, because of pharmacy वालों का ही company हो, they have taken over Thyrocare I think 2018 roughly. So that is trading 28 times EBITDA FY24 and 25 times EBITDA FY25. Vijaya Diagnostic 50 times, 50 times EBITDA and 42 times FY25. इसका रीजन है कि विजया का जो EBITDA margins and the efficiency which is highest in the industry, I think they roughly do 40 to 43% EBITDA margin, which is I think highest. And दूसरा जो प्लेयर है उसके बाद डायरेक्ट सुरक्षा है. सुरक्षा का मार्जिन सेकंड बेस्ट इन द इंडस्ट्री, आई थिंक रफली 36.5% एज ऑफ नाउ है, सॉरी 34.5% एज ऑफ नाउ है. बाकी सारे प्लेयर्स रफली 32-33% पे चलते हैं. अभी सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ आ रहा है 30.5 टाइम्स EBITDA FY24. मतलब अगर मैं पहले 4 प्लेयर्स सी, डॉक्टर लाल इससे आई थिंक 15 गुना, ऑलमोस्ट 10-15 गुना बड़ी कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, 10-15 गुना बड़ी कंपनी है ऑलमोस्ट. मेट्रोपोलिस भी बहुत बड़ी कंपनी, थायरोके और विजय, सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है सुरक्षा के सामने. अगर मैं इनका मीन निकालने जाऊँ तो रफली रफली 33-34 टाइम्स आता है. इन्होंने FY24 पे अपना खुद का 30.5 टाइम्स वैल्यूएशन लगा, और FY25 के अगर मैं ये जो इनके बड़े प्लेयर्स है इनका अगर एवरेजिंग आउट करूं तो रहेगा रफली रफली 27-28 टाइम्स, और यार 25.5 टाइम के करीब. मतलब आप अगर गैप निकालने जाओगे तो 6-8% का निकलेगा, विच इज आई थिंक नॉट एट ऑल एन आइडियल स्कोप लेफ्ट फॉर द इन्वेस्टर. सी, ये कंपनी पहली बात तो इन द रीजन दिस कंपनी ऑपरेट्स, पहली बात तो देयर जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेरी बिग रिस्क. एक्चुअली आई नो कि सभी जो डायग्नोस्टिक चेन्स होते हैं उनका कोई एक रीजन होता है जहां से इनका 50-60% रेवेन्यू आता है, बट 50-60%, 97-96% इज डिफरेंट है. और 96 में से भी आपको 75% फ्रॉम 3 रीजन्स, 75-80% रेवेन्यू आ रहा है. दैट इज अ रिस्क. द सेकंड इज इन विच रीजन इट ऑपरेट्स. इट ऑपरेट्स इन कोलकाता, एंड वी ऑल नो कि लास्ट 3-4 साल में कोलकाता से कितनी कंपनी आई और किसने कितना आई थिंक एक कहते हैं ना रेवेन्यू ग्रोथ है, फिर स्टॉक मोमेंटम दिया है आपको, तो कोई नहीं देती. तो आई जस्ट टेल कि सम पास्ट कोलकाता कंपनीज जिन्होंने कैसा परफॉर्म किया है. वेस्टर्न कैरियर्स 2-3 महीने पहले आईपीओ आया था, आई थिंक 2 months बैक, 175 पे आईपीओ आया था, अभी 115 रुपए पे चल रहा है. बाजार स्टाइल इज अ गुड कंपनी, बट स्टिल 15-20% बिलो आईपीओ प्राइस. आप ये देख लो. और ये और वो मेटल की श्याम मेटालिक्स भी थी, वो भी उसने भी बहुत टाइम तक 2-3 साल परफॉर्म नहीं किया. न्यूवो को विश्वास
अभी भी आईपीओ प्राइस से 30% नीचे है, विच वॉज 2021 में आईपीओ आया था। तो आई थिंक दिस रीजन इज नॉट नोन फॉर बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है ये स्टेट से। एंड आई थिंक इन एन हेल्थ केयर बिजनेस to grow on that pace is very tough. And I think management was asked कि आपने जो FY24 में growth करा है 21% का, can you sustain or increase that? Management said कि we will try to sustain or maintain the growth, but they were not that confident कि हम कर पाएंगे। तो I think इससे 10 गुना बड़ा प्लेयर 25% 22% ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। दे आर, आई फील दिस कंपनी कैन ग्रो रफली 16-18% नेक्स्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से इसको क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। एंड आई थिंक वन मोर थिंग टू एड इज देयर प्राइवेट इक्विटी फंड ऑर्बिमेड, इनका और एक आईपीओ आया था, इट वाज रफली 6 मंथ बैक, एंट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड, 1600 करोड़ का आईपीओ था। सिमिलर इश्यूज थे, बहुत अच्छा कंपनी, बहुत अच्छा था, बट वेरी वेरी हाईली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। इट लिस्टेड आई थिंक एट पार, एंड उसके बाद 20% बिलो इश्यू प्राइस मिल रहा था इन नेक्स्ट 2 वीक्स। तो आई थिंक मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट मैंने क्यों करना चाहिए, मुझे इसका एक छोटा सा आंसर भी नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट कमिंग, मतलब क्या होता है कि आपने इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी तरह का स्कोप नहीं रखा है, नॉर योर बिजनेस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर योर रीजन इन विच यू ऑपरेट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना ही आप वो स्केल पे हो कि यार, मतलब 200 करोड़ का स्केल, आप 1994 की कंपनी हो, 200 करोड़ का स्केल कुछ नहीं होता। तो आई थिंक आई एम क्लियरली नॉट गोइंग टू अप्लाई इट। जैसे एक रिटेल टाइम पास के लिए फॉर अ ट्रैकिंग पोजीशन तो कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, सो अवॉइड फ्रॉम माई पार्ट। Got it. So just one more thing, if you, Tanmay, you could touch. I had also a very similar review, but can you also touch a bit about the growth parts? Because FY23 से FY24 में growth दिखेगी आपको, but FY22 में से degrow हो गई थी, right? Company. So essentially the company नहीं in सर, terms वो of कोविड revenue. कोविड का था। सी अगर मैं आपको वो उसका रेवेन्यू बताता हूँ कैसा होता है कि हम्म, जो हम्म, कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन और जो कोविड का लैब टेस्टिंग था ना, हम्म, वो दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड रफली 20-25% इन रेवेन्यू फॉर FY22 ड्यू टू द कोविड इम्पैक्ट। बट अगर आप FY25 देखोगे, 23 देखोगे, तो वो घट के वो 23% का 5% पे आ जाता है। और FY23 में तो इनका नॉट इवन 0.5%, 0.2 और 0.3% रेवेन्यू केम फ्रॉम दी कोविड वैक्सीनेशन एंड कोविड टेस्ट। तो वो जो एक रेवेन्यू है ना, वो कम हो गया। और उस टाइम पे क्या था कि आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच रही थी, इसलिए वजह से आपका मार्जिन भी बहुत, आई थिंक उस टाइम पे कंपनी रफली 35% 36% एबिटा किया करती, 36% किया करती थी। देन देयर मार्जिन ड्रॉप बाय 33.5% टू 33.5%। नाउ इट इज बैक टू 35.6%। मैनेजमेंट इज सेइंग कि हम अगले 2 से 3 साल में 42% के रेंज में पहुंचेंगे, मतलब रफली 36.5% पे करीब कर सकते हैं ये। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अगर मैं वो बेस को निकाल दूं, the company has grown roughly by 15% in FY23. Then it has grown by 20%, and next year it is approximately expected to grow at 16 to 18%. मतलब ऐसा ओकेश ग्रोथ है। I know 16-18% is a damn good growth, but इसे 10 गुना बड़ा प्लेयर अगर 20-25% कर पा रहा है, और ये इतने छोटे बेस पे ही अगर 15-17% कर, एंड वो आपको सेम वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो मैं एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी जो मुझे 10 साल से स्टॉक मार्केट्स में दिख रही है, मैं उनके मैनेजमेंट को 5 से जानता हूँ, तो आई जस्ट बेट ऑन दैट कंपनी ना। पहली बात तो मुझे सेगमेंट ही ज्यादा पसंद नहीं, बिकॉज इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज द ओवरऑल स्टफ की FY22 से FY23 में डी ग्रोथ क्यों आया था। got it. Understood. And anything that you found interesting in terms of the anchor book, why I'm asking this question is also from the angle of there might be a lot of healthcare focused funds who might be interested in this, right? Because healthcare as a theme has picked यस, up. So do you think there might be a करेक्ट few करेक्ट। mutual funds who want to load up on this share as a new healthcare option? Yes, actually, sir, Anchor Book, to be very honest, which was good than expectations. Quant had invested by, I think, roughly 3 funds. Vikas के मानी कार्नेलियन फंड had invested, and बाकी सब तो नॉर्मल फंड्स थे, फिर छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स थे। मेरा एसेट का एक छोटा पार्ट था, निपॉन ऑल्सो इन्वेस्टेड। बट आई थिंक सर दिक्कत इसमें ये है कि ये इस तरह की कंपनी की आफ्टर लॉन्ग टाइम डायग्नोस्टिक कंपनी इज कमिंग विद एन आईपीओ। जो मुझे याद आ रहा है, कृष्णा डायग्नोस्टिक का आईपीओ आया था 2022 के मिड एंड में, ऊपर से वो 40% घट भी गया उसके बाद, आफ्टर लिस्टिंग 2x। तो उसके बाद ये पहली कंपनी है डायग्नोस्टिक में जो आ रही है, और जो हेल्थ केयर फोकस फंड्स है उनको भी कोई अच्छी कंपनी, अच्छी नहीं बोलूंगा कंपनी आ रही है सिर्फ बहुत दिनों के बाद। सो आई थिंक
उनको सिर्फ फंड डिप्लॉय करना है, सो दे माइट बी इन्वेस्टिंग, बट एक दो फंड्स ऐसे दे आर गुड इन्वेस्टर्स, बट आई थिंक जजिंग द कंप्लीट एंकर बुक और द कंपनीज इज बेस्ड ऑन वन और टू इन्वेस्टर्स डजंट मेक सेंस फॉर मी. तो वो चीज है. Got it. And like one more question, since you're saying it should be evaluated at EV by EBITDA. So you're taking out the depreciation part of it completely, right? But like what if this company, like iske jo labs and like what is the average aging like of all depreciation and how do you compare it? Maybe like going forward, would the depreciation remain at the same level? Like you did answer it by saying the नहीं सर, वो तो company. बढ़ते जाएगा ना. सी नंबर ऑफ सेंटर्स ग्रोइंग अप इज प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन ग्रोइंग. सी आई थिंक रफली इसका 25 या 35 करोड़ कुछ डेप्रिसिएशन था. इफ आई एम सीइंग कि पिछले 3 साल से डेप्रिसिएशन 5% से ग्रोथ कर रहा है, बट FY25 में वो रफली 10% से ग्रोथ करेगा, बिकॉज उन्होंने 5-6 नए सेंटर्स खोले जो पहले दो तीन ही थे. और टोटल आई थिंक उनका अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने अब तक देखा नहीं है, बट आई थिंक रफली जो हमेशा देखते कि उसी पेस से ग्रो करना चाहिए जैसे वो जितने सेंटर्स खोल रहे हैं. आई थिंक वो लाइफ का होगा, बट आई थिंक जिन इनका 2017 के पहले इनके पास सिर्फ 6-8 सेंटर्स थे. उसके बाद आई थिंक लाइट स्पीड इन्वेस्टेड 30 करोड़ इन इट. तो 2017 से ही कंपनी ने पिकअप किया है, तो आई थिंक डेप्रिसिएशन इफेक्ट तो और 2-3 साल तो कम से कम रहेगा ऑन अ गुड पेस. Got it. And which is the fund exiting? Like who all is exiting? ऑर्बिमेड 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 इज एग्जिटिंग. उसके बाद इनके 2-3 पब्लिक शेयर होल्डर्स है, लाइक केजरीवाल फैमिली है, मुन्नालाल केजरीवाल और कुछ तो 2-3 नाम है. बहुत पुराने इन्वेस्टर्स है. दे आर एग्जिट, मतलब आई डोंट थिंक दे आर इन्वेस्टर्स, दे आर जस्ट आई थिंक फैमिली फ्रेंड्स काइंड ऑफ थिंग हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी. एंड ऑर्बिमेड, सी एक्चुअली ऑर्बिमेड का सिनेरियो ऐसा है कि इन 20 आई थिंक 13-14 आई थिंक नहीं हाँ 2013-14 में लाइट स्पीड वेंचर्स प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड 30 करोड़. फिर 2017 में ऑर्बिमेट बॉट दैट स्टेक फ्रॉम और लाइट स्पीड, एंड 2020 में उन्होंने और पैसे डाले. तो आई थिंक वैसा बाय आउट हुआ, एंड इट इज नाउ आई थिंक प्री मनी ऑलमोस्ट 32-33% ओनर ऑफ द कंपनी, एंड पोस्ट मनी 12% स्टेक बचेगा शायद. मतलब मेजरली ट्रिम ही कर रही है और 4.5 गुना के रिटर्न पे एग्जिट ले रहा है वो रफली. एंड आई थिंक वन मोर थिंग आई थिंक फॉरगॉट टू टेल वाज कि आई थिंक थोड़े कुछ दिनों पहले वैसे उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर में अच्छे से उन्होंने बताया नहीं कि मैनेजमेंट ने एक ऋतु मित्तल जो उनकी सीईओ है, उन्होंने एक चीज बताया कि प्रमोटर इज डूइंग ओएफएस टू जस्ट फॉर एन लिक्विडिटी इवेंट. इसमें हम वो पे आउट करके हमारा जो प्लेज है वो हम निकालना चाहते हैं. आई थिंक इनका जो स्टेक है कंपनी में दैट इज प्लेज्ड, एंड वो निकल जाएगा आई नो. बट जो मैं जानता हूँ कि एक ऐसी कंपनी आई थी, ठीक कंपनी थी, साई सिल्क्स कला मंदिर करके 1.5 साल पहले आईपीओ आया था. इट इज नाउ रफली 30% बिलो इश्यू प्राइस, और एक टाइम पे 40% भी थी. तो मार्केट को ये जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी होती है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं आती. हमने पास्ट में देखा है ये नए आईपीओ के साथ, पुरानी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज के साथ. तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मार्केट किस तरीके से वो उतर जाएगा. बट साइसिल का उस टाइम का जो प्लेस था वो अभी तक आधा ही उतरा है, उसको अभी लिस्ट होकर 1.5 साल होने को आ गया, 1.25 साल. तो आई एम नॉट श्योर कि मार्केट इसको किस तरीके से देखा, बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड तो प्लेस रिलेटेड कंपनीज का बहुत बुरा है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा बुरा है. Sorry, I was on mute. So I was saying अभी ना एक दिन ना हो गया है कंपनी के आईपीओ को आए हुए, 2 दिन और बचे हैं, राइट? सो डू यू एक्सपेक्ट दिस IPO to go through? I'm assuming it will definitely go through, considering that QIBs will sell it out on last day. सर आई थिंक लास्ट टाइम सर ये सेम क्वेश्चन है. आई थिंक एंट्रो हेल्थ केयर के टाइम सिमिलर चीजें हुई थी. एक्चुअली इट वाज द ओनली आईपीओ जिसमें लाइक ट्विटर पे वो ट्रेंड चला था कि बॉयकॉट एंट्रो हेल्थ केयर आईपीओ. दैट वाज द ओनली आईपीओ इन 2023 व्हिच 2023 2024 आई थिंक जो उस तरीके से उसको हिट मिला था उस आईपीओ को. बट आई थिंक वो आई थिंक रिटेल में कुछ नहीं भरा था. HNI में तो ऑलमोस्ट आई थिंक 80-70% अंडर सब्सक्राइब था, बट देन लार्ज बिड के फ्रॉम मॉरिशियस एंड देन एंटायर आईपीओ सेल्ड. आई थिंक यू नो, और ऑर्बिमेड इज अ मॉरिशियस बेस्ड पी फंड. मतलब मॉरिशियस बेस्ड नहीं, बट जो इनका ऑफशोर एंटिटी वो मॉरिशियस का, तो यू नो कि आईपीओ तो सेल होना इज नॉट अ बिग थिंग फॉर देम ऑनेस्टली, बिकॉज बाद में डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे भी हो ही जाएगा. Got it. So now the question, although you have mentioned not to play, but just want to highlight any case in which you will be like applying to this IPO, any QIB number which would make your mind change or something Sir, like to be that. very honest,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हेल्थ केयर का 2-4 फंड छोड़ दूं तो आई डोंट फील क्यूआईबी में से कोई लेगा, आई थिंक बाय करने आने वाला है। इसका रीजन सिंपल है यार, कि मतलब सिर्फ 6-8% के गेन के लिए आप मतलब जितने मार्केट कैप पे आईपीओ आ सकता था वो उतना तो ये आईपीओ कर रहे हैं यार। मतलब वो वाला चीज है, बहुत ही ज्यादा महंगा ला रहे हैं। मतलब आपने पब्लिक इन्वेस्टर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मतलब आई थिंक 850 करोड़ पे आता ना सर, तो भी इसका पी टर्म्स में 40-45 पे पी होता। अब सोचिए 846 करोड़ 22 के इस पे, तो रफली रफली 38-37 का पी हो जाता। पीयर्स 50-55 पे मिल रहा है। मैं पी टर्म्स में बोल रहा हूँ, आई नो कि पी टर्म्स इज रॉन्ग वर्ड, बट ठीक है। मतलब आई थिंक और डाइल्यूशन में बहुत बड़ा कर रहे हैं। 37% ऑफ कंपनी बेच रहा है आईपीओ में। मतलब इतना बड़ा जब भी डाइल्यूशन ज्यादा होता है ना, वो भी आईपीओ का ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में खराब है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आइनॉक्स ग्रीन 74 पे आईपीओ आया था, लिस्टिंग 8% नीचे हुई थी, उसके बाद 55 पे मिल रहा था। ये अपना एसडीएस इंटरप्राइजेस अच्छा अभी कर रहा है स्टॉक, बट उस टाइम पे भी 38-40% डाइल्यूशन तो बहुत बुरा पिटा था। तो ये जो हाई डाइल्यूटेड आईपीओ होते हैं ना, जिसमें पब्लिक प्रमोटर टोटल कंपनी का जितना डाइल्यूशन होता है, वो उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बुरा ही है जनरली। Got it. I think you have kind of mic drop वाला statement हो गया है कि जितने का मार्केट कैप होना चाहिए था उतना तो मार्केट आईपीओ साइज है. So don't leave a lot. Although I honestly I didn't find the company that bad. I think it's very equitable to the नहीं सर, like other मैं ये companies नहीं which बोल is रहा हूँ कि invested. कंपनी बुरी है। हाँ. कंपनी बुरी बिल्कुल नहीं है, अच्छी कंपनी है। आई ऑल्सो लिसन टू दैट डॉक्टर सोमनाथ चैटर्जी, आई थिंक 2017-18 का मैंने उनका क्लिप सुना। आई थिंक गुड पीपल आर गुड यार, बट द थिंग इज वेर इन्वेस्टर्स नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सो वी आर हियर टू मेक मनी। एंड मुझे ये टेबल पे मतलब यार सर 6 महीने लगा कि मुझे ये इसमें 20% भी गेन नहीं दिख रहा है। मतलब 6 महीने का अगर मैंने मतलब हो तो भी मैं 20% के ऊपर इसमें देख ही नहीं रहा हूँ। 20% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। So I think it doesn't make sense, honestly. Got it. So with that, we have kind of covered Suraksha Diagnostics. I will also probably not apply to this IPO, or if I do, it will just be a very small tracking position unless something changes last minute. I'll look at QIB, etc. But yeah, for now, this seems like a void. With that, maybe we will go forward and talk about the second company for the day. But uske pehle just want to highlight that if anyone has joined in between or is listening to us for the first time, we cover companies every week for the IPOs which are coming from a fundamental perspective. And the same we upload it on our YouTube channel, the link to which is in the pinned comment. ऊपर आपको दिख रहा होगा YouTube का link. उस पे जाके जिस channel को subscribe कर दीजिए and you can listen to any of the IPOs at your own pace. With that, we'll move forward to the SME IPOs, and there are three very good, like not very good, but three IPOs which are coming and very different and thankfully decent size. So subscription should not be that crazy. With that, let's start with the first company, the name for which is Ganesh InfraWorld. The company offers a wide range of construction related services and has major segments of civil and electrical infrastructure, road and rail infrastructure, and water infrastructure. अगर मैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की बात करूं, so the company is coming with an IPO size of 100 CR, 98.5 CR to be specific. So it's a big size IPO. All of it is fresh issue. And the market cap at which it is coming is 350 CR, 354 CR. And in terms of the financials of the company had done 291 CR worth of revenue and 15.5 CR of bottom line the company received. In terms of the LM is Vivro Financials. So again, like this is a LM which whose IPOs are rather rare. कभी कभार IPOs आते हैं. Recently they came up with a Sir, I'm not able IPO to hear of you. I think everyone else can. Yes, Yes, can Manish, you I hear me? can hear you. Okay. So, हाँ सर, Vibro यू आर ऑडिबल। Financials आप के IPO. फाइनेंशियल्स बता रहे थे, आपका आवाज गया हुआ है। Yes. So, Vibro Financials से LM. IPO कभी कभार आते हैं. Last company which came up was Shivtex came. Bondada वगैरह का IPO LM है ये. So, enjoys a good reputation. But yeah, the company which is coming is Ganesh InfraWorld. So now that we have covered this, maybe yes, do you want to go ahead and share your read of Ganesh InfraWorld? Sure, Manish. So the Ganesh Infra is a construction company which offers a wide range of construction and other services across various industrial projects, commercial buildings, road constructions, railway infrastructure projects, and water distribution projects in India. So they are into the EPC. Uh,
engineering, procurement and construction of these uh, projects. इनका जो value chain है, they are mostly subcontractors for a primary contractor, and इसके three vertical जो main है, which is civil and electrical infrastructure project, road and railway, and water infrastructure development projects. अब जो कंपनी ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स बोला है अपना, दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ 5%, 5 to 6% ऑफ द रेवेन्यू इन FY24. तो मोटा मोटी कंपनी को एज अ रोड एंड रेलवे प्लस सिविल नॉर्मल रियल एस्टेट कंपनी की तरह, नॉर्मल रियल एस्टेट सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखना इज मच बेटर. इनका प्रमोटर प्रोफाइल में देख रहा था. प्रमोटर प्रोफाइल में देर इज विभोर अग्रवाल, हु इज 38 years old and has been into construction business over 8 years. So quite young blood है business में अभी से. Then the main guy, which I think is operating officer, Roop Kumar Bhattacharya, he is having more than 24 years of post qualification experience across construction and engineering projects. तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कि मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सिविल प्रोजेक्ट्स, रेलवे वगैरह एंड रोड वगैरह इज क्वाइट लेस. रेलवे इज क्वाइट लेस, रोड इज स्टिल देयर. तो इसमें दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एक तो होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल टास्क या इंडिविजुअल मटेरियल पे लिस्ट बनाते हैं क्लाइंट, एंड वो लिस्ट सप्लाई कर देते हैं. क्लाइंट का डिजाइन होता है, क्लाइंट का सब कुछ होता है, आर्किटेक्चर वगैरह क्लाइंट्स का होता है. जो खाली लिस्ट के ऊपर जो भी इंडिविजुअल कोड्स होते हैं उसके ऊपर के बेसिस पे इनको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि भाई ये सामान हमें चाहिए एंड ये करना है. तो ये सब प्लस 5% या जो भी इनका मार्जिन होता है वो रख के ये लोग काम करते हैं. जो सेकंड वाला और अगर आइटम रेट में ऐसा होता है कि अगर कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन आ जाता है तो वो कंपनी को पास ऑन किया, क्लाइंट को पास ऑन कर दिया जाता है. तो फाइनेंशियल सर्टेनिटी भी थोड़ा रहता है. दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कहते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्लाइंट क्या करता है, एक पूरा बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाता है एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट देता है हर एक चीज का. अब इसमें क्या होता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा इन्हें परसेंटेज पे दिया जाता है कि अच्छा पूरा प्रोजेक्ट तुम कितने में कर सकते हो, काइंड ऑफ ऐसा. तो इसमें ऐसा होता है कि एक बड़ा प्राइमरी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं जिसे, वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, एंड देन बिडिंग वगैरह सब वो करता है मेजर बिडिंग प्रोसेसेस में. देन वो अगर वहां से विन करता है देन उसके बाद इन्हें नीचे काम दिया जाता है विच इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग का. तो इनका जो revenue split है, that is also earned as a contractor is very less, which is almost 18% in FY24, and earned as a subcontractor is around 81%. तो मोटा मोटी सब कॉन्ट्रैक्टर का वैल्यूएशन मिलेगा इसको. ओनली 18% दे आर डूइंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर. तो थोड़ा मिक्स ऑफ दोनों का दिया जा सकता है. सो द कंपनी इज कमिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ आई थिंक 9 का प्राइस टू अर्निंग्स है. इफ आई एनुअलाइज व्हाट द नंबर्स आर देयर फॉर टिल अगस्त को, अगर मैं अगस्त वाले नंबर्स 15 करोड़ पैड किया है, अगर इसको मैं एनुअलाइज कर दूं तो 9 के फॉरवर्ड पी पे आ रही है, FY24 पे 2022 के फॉरवर्ड पी, 2022 के TTM पी पे आ रही है, विच इज क्वाइट फुली प्राइस्ड एज ऑफ नाउ. कि 2022 का पी इज इनफ फॉर कंपनीज जो इस सेगमेंट में काम करती हैं. बट इन्होंने अपने RHP में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया हुआ था, विच इज उन्होंने 13 फेब से 31 मार्च का डेटा अलग से दिखा रखा है, एंड उससे पहले इन्होंने फुल ईयर का भी दिखा रखा है. तो इन्होंने फेब 2024 तक, मतलब अप्रैल 24 से फेब 24 तक, मतलब अप्रैल 23 से फेब 24 तक ऑलमोस्ट ये 11 मंथ्स में 10-11 मंथ्स में इन्होंने 11 करोड़ का प्रॉफिट किया है. बट अगर मैं देखूं फेब से मार्च तक, तो इन 2 मंथ्स में दे हैव डन अ प्रॉफिट ऑफ 4.98 करोड़. तो थोड़ा सीजनैलिटी भी है बिजनेस में इनके, विच इज मोर ऑफ अ Q2 H2 हैवी काइंड ऑफ बिजनेस. तो अभी इन्होंने अगस्त तक का दिखाया है, तो दे हैव डन अ पैट ऑफ 15.37 करोड़ का. बट रेवेन्यू उसमें कम है लास्ट ईयर से. अब लास्ट ईयर में कम है प्लस मार्जिन एक्सपैंड हुआ है. आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ जो इनका सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर में ज्यादा काम किया है. ठीक है ना. तो एंड अभी जो करंट ऑर्डर बुक है कंपनी का, आई थिंक द करंट ऑर्डर बुक एज पर द RHP इज क्लोज टू 574 करोड़, जिसमें से रेलवे का तो देर आर नॉट मेनी प्रोजेक्ट्स. सिविल वगैरह का 84%
काम है इसमें से, रोड एंड रेलवे इंफ्रा इज 15% एंड द रेस्ट 0.7% इज वाटर इंफ्रा. तो वाटर तो साइड ही हो गया पिक्चर में से. अब रोड एंड रेलवे में से भी आई चेक द डिटेल ऑर्डर बुक, उसमें से भी मोटा मोटी सारा रोड का ही है. फाइनेंशियल्स तो विजिबिलिटी भी है, बट फाइनेंशियल, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स FY 23 से 24 बहुत अच्छा ग्रोथ आया है कंपनी में. एंड ऑर्डर बुक को देखते हुए आई थिंक FY 25 भी बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा. बैलेंस शीट लुक्स फाइन. थोड़ा ट्रेड रिसीवेबल्स ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट लास्ट ईयर वाज, गिवन उन्होंने अगस्त तक दिया है. बट आई थिंक दिस इज मोर बिकॉज कि 4 महीने में पूरे साल का बिल कर दिया है, तो विच इज स्टिल फाइन. मोटा मोटी कंपनी इज लुकिंग वेरी गुड फॉर टू अप्लाई इन IPO. एंड अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इसमें प्री IPO भी हुआ है एंड वेरी गुड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव टेकन पार्ट इन प्री IPO. बट द इशू वाज कि प्री IPO आई थिंक 50 रुपीज कुछ पे दिया गया है. मतलब दे गेव इनिशियली एट 100, बट देन उस पे फेस वैल्यू का स्प्लिट आया, 5 करा फेस वैल्यू को, तो आई थिंक 50 तक का हो चुका है. तो गिवन की IPO तो फुली प्राइस्ड है ऑन TTM बेसिस, तो थोड़ा कॉशियसली प्ले करना है इसको. आई थिंक फिर भी 40-50% का लिस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर नाउ हेयर स्टैंडिंग एट नवंबर, खत्म हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो मार्केट उसको थोड़ा जल्दी प्राइस करेगा. बट ओवरऑल इशू, गिवन द LM रेपुटेशन इज वेरी गुड एंड बिजनेस फाइनेंशियल्स एवरीथिंग लुक्स नाइस, तो अप्लाई किया जा सकता है. Got it. When was the pre-IPO done, Yash? जुलाई, दिस ईयर जुलाई. Okay, so July से लेके November तक में the price has increased 60%, like 50 Yep. rupees to 80 rupees, something like that, Yes. right? 70%, 83. Yes. आई थिंक दिस माइट बी ऑल्सो द केस मनीष, क्योंकि अगर जुलाई में उन्होंने प्री IPO किया है, तो अगस्त, आई थिंक अगस्त में उन्होंने फिर ज्यादा बिलिंग करा होगा. दिस इज व्हाट आई एम बिलीविंग कि द रीजन फॉर गिविंग देम एट लो प्राइस. बट अगेन इंफ्रा कंपनी भी है, तो यूजली जो SME इन्वेस्टर्स होते हैं या कोई भी लेता है, तो दे प्रेफर कि बहुत कम वैल्यूएशन पे मिले उन्हें प्री IPOs, जिससे कि थोड़ा कुशन रहे, एटलीस्ट ऑन रियल एस्टेट वाला कंपनीज. Got it. So this, I would think this is a pure play subcontractor. Let's just assume that way. Yes, So correct. would a Mason Infratech be a good peer, or like how do you look at peers? कि peer कौन होंगे इसके? Peer, they have mentioned AVP Infra, Chawla Infra, and PSP projects. I think all are trading around, AVP and Chawla are all trading around 18 to 20 ka PE. PSP projects में I think there is a more angle of Adani coming and acquiring it, so थोड़ा उसका प्रीमियम ज्यादा है, close to 28-27 का वैल्यूएशन मिला है उसको. But more or less Chawla and AVP are both trading at the same multiples. But 15. isn't like AVP also has a solar story, if I'm not wrong? Like Yes, correct. something like But I think it is yet to materialize as of now. वो FY 26 से पिक्चर में आएगी, तो वो इशू भी है उसमें that. कि Got it. अभी उसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है. प्लस चावड़ा में ये इशू था, आई थिंक फर्दर ग्रोथ के लिए देयर इक्विटी कैप, द इक्विटी कैपिटल ऑन देयर बैलेंस शीट हैज बीन कैप्ड, तो इसकी वजह से दे नीडेड फंड्स. थोड़ा फंड न्यूज का भी था इसमें, बट वो नहीं कर पा रहे थे रेज ड्यू टू दिस द रूल की बैलेंस शीट पे इक्विटी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई थिंक फॉर SME. Got it. So my question to you, I'm not sure if you analyzed, I haven't. What is the TTM PE? कि आपने बोला कि 9 PE पे आ रही है annualized and TTM 22 PE है 20, yes, FY 24. करेक्ट. तो TTM पे इज ऑलमोस्ट 15 करोड़ ये हो गया. पिछला नंबर दिया हुआ है क्या उन्होंने मार्च तक का? लाइक आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव गिवन इट और नॉट. नो, दे हैव गिवन ईयरली नंबर, बट आई एम स्टिल अज्यूमिंग कि लास्ट ईयर उन्होंने कितना किया होगा. क्योंकि उन्हें फेब मार्च का दिया हुआ है, राइट? लाइक फेब मार्च का कितना है पिछले साल में 15 में से? नहीं, फेब मार्च का तो ज्यादा है, बिकॉज सीजनैलिटी आता है ना बिजनेस में, एंड ये वाला साइड वीक होता है, मतलब दिस H1 इज सपोज टू बी वीक. तो अगर मैं उसको कंसिडर भी करूं, तो ऑलमोस्ट 25 करोड़ का TTM पैट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Got it. So 25 and the valuation is 354. So coming at like 14 PE. करेक्ट. So that gives me a gain of 18 by 14 approx at a very high level if I have to think about it, right? करेक्ट. Like 30% gain. करेक्ट. But having said that, these IPOs can like settle at that gain, but it can go very high as well, which is what we saw with Mason. Like Mason had went up very, very, very high
and then settled at somewhere around 18p, right? So definitely don't think कि 30% gain होगा, but at least seems like a good issue again. As I said, it is cheap. IPO price पे I feel there is a reasonable level of cushion, so I don't mind applying at IPO price, but yeah, I would probably not be caught in the frenzy and then kept holding the parcel at a very high price. Is that read right? Correct. Perfect. Anything on the anchor book? Is it out? When's the? Yeah, it should be out, right? The IPO is Yeah, yeah. already. Yeah. Yes, yes. The anchor book is out. I think decent set of investors. Decent set तो नहीं बोलूंगा. I think next Orbit Ventures है, Finaventure Growth है, then Chanakya Opportunities Fund है, Rajasthan Global था. So yeah, seems like a apply then at least at IPO price, and then probably see. I think it should list well, and then probably also go up slightly in a frenzy. Just don't be caught in it. Tanmay, do you have anything to add on Ganesh Infra? मुझे ठीक ही लगी कंपनी, ज्यादा ठीक ठाक कंपनी है. आई फील उसमें थोड़ा सा लिस्टिंग बन जाएगा. Got it. With that, maybe we will move forward to the next issue now. Going to talk about is Agarwal Toughened glass. The company essentially manufactures tempered glass, which is used in various industries such as shower doors, refrigerator trays, mobile screen protectors, diving mask, and a variety of other cookware. If I talk about the IPO, again, a very decent sized IPO, 62 CR IPO, all of it is fresh issue. And the company is coming in at a market cap of 191 CR. In terms of the financials, the company had done 40 CR top line in FY24 at a PAT of 8 CR, 8.5 CR. So in a way, the company is coming at like 20p, if I'm not wrong, on FY24 financials. In terms of the LM is cumulative capital. Decent LM, like at least he was able to manage the last issue well. Last issue they bought in was Pilatro, which had a lot of controversy but listed well. So with that, let's talk about Agarwal Toughened glass. Tanmay, do you want to go ahead and share your read of Agarwal Toughened glass? Yes. So Agarwal Toughened Glass is a manufacturer of toughened heat-soaked laminate safety insulated glasses, which are used in refrigerator trays, mobile glass, bulletproof glass, which is used in the helmet. They also have the glasses for plates and crockery and cookware. Okay. So this company is basically raising 62.6 crores, completely a fresh issue. 25 crores at Enmark for working capital, then 6 crore for repaying debt, 9.7 crores is for capex, and 22 crores is for listing expenses and GCP. Okay. So this company is intending to double their glazed glass and entering some new categories of glasswares. This company also has already two listed companies. One is Agrawal Float Glass Limited, which is a trading company. I think I think what I could understand out of that company's 2 minutes trading was what glass is made by Agrawal Toughened or their group is being traded by the listed company, Agrawal Float Glass Limited, and they also have an I think NBFC kind of a subsidiary which haven't done anything, मतलब zero, almost 6-7 करोड़ के market cap stock 50-60% corrected है, कुछ ऐसी चीजें. So this company did a revenue of 40.6 crores in FY23. That was just 97 lakh rupees. But in FY24, the revenue dropped by 1%. The revenue at 40.5 crores and the PAT increased to 8.7 crores. मतलब ये पैट 1 करोड़ के अंदर से कैसे सीधा 8.7 करोड़ हो जाता है विद अ स्मॉल डी ग्रोथ इन टॉप लाइन. आई थिंक मुझे समझा नहीं कि क्यों बढ़ा. आई थिंक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा पढ़ा मैंने, बट मुझे कोई ऐसा उसका अच्छा रीजन नहीं मिला. H1 में रेवेन्यू वाज 23.5 करोड़ एंड पैट वाज 4.5 करोड़. मतलब मैं रफली बोलूँ तो ये साल करीब 50 करोड़, मतलब टीटीएम बेसिस पे 47 करोड़ आ रहा है, बट आई फील 50 करोड़ कर देगी कंपनी. तो उसके हिसाब से पैट इसका करीब 9.5 करोड़ के आसपास रहेगा. This company has an exclusive agreement with Saint Gobain
आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट इन दिस कंपनी कि आपके पास सेंट गोबेन के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स अंडर सेंट गोबेन्स नेम, ऐसा कुछ तो है, बट दे हैवंट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ आई थिंक मोर डेटा रिलेटेड टू दैट एग्रीमेंट कि हमने इससे कितना रेवेन्यू किया, हम इसका क्या एप्लीकेशन करते हैं, वो ज्यादा चीजें दी हुई नहीं है। उस पर डेटा नहीं ज्यादा। इसका और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई थिंक मैं इस पे और ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, तक आई एम येट टू रीड दैट। इन्होंने 5 बार अपना ऑडिटर चेंज किया है, ये इस कंपनी ने 5 बार, आई थिंक मुझे तो समझा नहीं कि 1 2 3 बार भी समझते, 5 बार की ऑडिटर चेंज करना पड़ा, नो आइडिया। इसका एलएम है क्यूमुलेटिव प्लेट्रो, पहले एक ही आईपीओ था इसका, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मतलब दोनों ही आईपीओ ऐसे लाए जो मतलब ज्यादा क्लीन ना हो, और 191 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रहा है, FY24 पे 22 की पी पे है, और FY25 के एक्सपेक्टेड पे करीब करीब 17-18 टाइम पे है। मतलब आई थिंक सच कंपनी, मतलब आप ऐसा, इस पे भी वही चीज है कि पहली बात तो कंपनी में बहुत ज्यादा इश्यूज है, आई थिंक लिटिगेशन भी है कुछ, एंड आई थिंक जो ऑलरेडी 2 लिस्टेड कंपनीज है मार्केट में, उन्होंने भी कुछ खासा किया नहीं है। आई थिंक वन मोर पॉइंट वॉज कि इनका थोड़ा वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लोज, थोड़ा रिसीवेबल्स, थोड़ा कोई तो क्रेडिटर है उसको इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं बहुत टाइम से, ऐसा कुछ तो है। आई थिंक लॉट ऑफ फ्लॉज इन इट, एंड आई थिंक उस पर बहुत ज्यादा मार्केट में निगेटिविटी भी है इस इश्यू पे। एलएम ठीक है, एमएम भी इसका निकुंज है, जो पिछले 5 आईपीओ में से बहुत ही ऊपर नीचे, 5-10% ऊपर नीचे वाला सिनेरियो, कुछ डिस्काउंट से कुछ फ्री में, नॉट मोर देन 5-10%। सो आई थिंक मतलब ऐसा मुझे कुछ इसमें भी नहीं लग रहा है कि यार इसमें क्यों मैं अप्लाई करूं, मतलब डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस की दूसरी मतलब आई नो कि गणेश इज अ गुड गुड, एटलीस्ट डिस्काउंट नहीं होगा इसकी तो गारंटी है, मतलब हो सकता है बट वेरी लिटिल चांसेस, बट मतलब इसमें भी कोई ऐसा रीजन नहीं, व्हाई शुड आई अप्लाई। एंड आई थिंक इन्होंने आरिश में 2 पीयर्स दिखाए अपने, बोरोसिल लिमिटेड, एंड द सेकंड वन वाज आई थिंक व्हाट आई कैन रिमेंबर, ये असाही इंडिया ग्लास दिखा शायद उन्होंने, थर्ड वन इज सेजल ग्लास, राइट, सेजल ग्लास एंड बोरोसिल लिखा है, बट असाही भी इसी थोड़े से ग्लास में, बट अलग सेगमेंट में, वाटर सेगमेंट में। बट सेजल ग्लास का कुछ अलग सिनेरियो है, वो स्टॉक क्यों चला है आई थिंक उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। बट बोरोसिल 50 के पी पे ट्रेड करता है, तो कोई बोलेगा कि ये 20 पे आ रहा है, 22 पे आ रहा है तो सस्ता है, बट एक्चुअली वो कंपनी भी उतना बड़ा है और उसका सेगमेंट भी वैसा है। ये कंपनी FY20, FY21, FY22, FY23, FY24 सब फ्लैट, और FY25 में से 15% ग्रोथ है। तो आई थिंक ग्रोथ तो कुछ नहीं है, तो वाई शुड आई पे इवन 20-22 पी फॉर इट, मतलब मुझे ये तो एक 13-15 पी का बिजनेस लगता है, वो भी आई फील पर्सनली फील कि यार अचानक से कहाँ से इतना मार्जिन बढ़ गया, तो आई थिंक आई थिंक क्वेश्चंस आर मोर, आंसर्स आर वेरी फ्यू, सो आई जस्ट गिव इट अ स्किप। Got it. Anything on the anchor book A and anything B on the GMP short term के लिए? Two specific questions, sir. पहले मैं एंकर बुक बताता हूँ। वीपी के ग्लोबल हैज टेकन 35%, नेक्टा ब्लूम, बेलग्रेव, चाणक्य, इन्वेस्टा, पेंटैक, तो ये कोई नया फंड है, और वीर क्वांट करके। तो आई थिंक जो टॉप एंकर है वीपी के ग्लोबल, मुझे याद है बलकॉर्प में भी आया था, ये इसेन में भी आया था, बलकॉर्प ऊपर से 40-30% घटा हुआ है। आई थिंक दे हैव टेकन ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का इनको अलोकेशन है इन अग्रवाल। इसका मैं जीएमपी भी बताता हूँ, गिव मी अ मिनट। 35 रुपए दिख रहा है, 42% दिख रहा है। अब पता नहीं कितना सही। नहीं नहीं, ट्रेड वो तो नहीं हो रहा सॉरी है, सॉरी वो सॉरी, दिख गणेश रहा है, मैं नहीं, बट मैं गणेश ठीक देख है रहा हूँ। माय मतलब। बैड माय बैड माय बैड, आप देखो एक बार। मैं नहीं, मैं देख रहा हूँ सर, 8 रुपीज दिख रहा है, 7% का जेब में, वही सोच रहा हूँ यार ये इतना हाई कैसे हो सकता है। नहीं, क्योंकि कल ही तो डील्स है 7-8 रुपीज पे, तो मतलब कहाँ से इसका इतना होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, जीएमपी 6-7-8% का है, बट आई थिंक यार सच इश्यूज ना, जीएमपी इनके लिए लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और आई थिंक आजकल का जो मार्केट है ना, वो जीएमपी पे रिलाई करने जैसा है ही नहीं। पहले बात तो जीएमपी पे कोई रिलाई नहीं करना चाहिए, बट जस्ट टेक इट एज एन बेस केस की यार ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एज एन क्या बोलते हैं, टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, या फिर कोई कुछ डिमांड है कि नहीं, उसके हिसाब से मैं जीएमपी देखता हूँ, बट जीएमपी शुड नॉट बी सोल रीजन टू अप्लाई। और 6-8% का जीएमपीआर, उसको 20% नीचे लिस्ट होने में कोई मतलब मैंने रिसर्च सिमिलर थिंग्स, नॉन एक्स सिमिलर थिंग, लैब मुझे आपने देख ली परसों लिस्टिंग, कितना बताया था, कल ही हुई शायद, हाँ कल ही हुई, कितना मैंने अच्छे से बताया था आईपीओ के टाइम पे, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। तो फिर वही 2 लोग थे जिनको मिला था, देव डीएम में, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि सर मुझे लामोसिक मिल गया, मैं अब क्या करूँ। मैंने पूछा तुमने अप्लाई करते टाइम पे तो मुझे नहीं पूछा था। तो वो चीज है कि अच्छे आईपीओ में पैसा लगाओ, गुड अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, ऐसा नहीं कि अकेला आ रहा है। तो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू अवॉइड इट, ऐसा बुरा नहीं है कंपनी, बट वाई शुड आई अप्लाई, वही चीज है इसमें।
Got it. But yeah, from what I heard, this doesn't seem like a company as bad as Lemosec, if I have to put it this way. I don't think this will, because again, this is a नहीं नहीं book सर, built कंपनी entity. बुरा नहीं है. हाँ, आई सेड दैट book built. सेकंड, आई एम नॉट हाँ, कंपेयरिंग इट टू लैमोसेक. आई एम जस्ट सेइंग कि वो मैंने जेएमपी के बैकग्राउंड से बोला था कि उसमें भी जेएमपी था 10-15% का, वो खुला 12% नीचे. मैं वो एंगल से बोल रहा हूँ. और दूसरा एंगल ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन. आई थिंक इफ आई एम आस्किंग कि इसका 1% मार्जिन से 24% पैट मार्जिन कैसे हो गया, आई थिंक नो वन हैज दैट आंसर ऑन द पैनल. So I think we don't have the answers of those questions. So why should we get very high confidence and just go and apply? That is the thing. got it. So yeah, again, I feel there are better opportunities. So this issue can be very clearly like let go of unless like वैसे वो बहुत highly subscribe हो तो भी मत करना generally because again especially what has been happening is like at the last moment there's a lot of subscription on the SME side, so I would probably just avoid this issue and try and keep some money for सर और एक चीज है कि 63 करोड़ का इशू, ऐसा नहीं कि 10-20-30 करोड़ का इशू yes. है तो यार कुछ भी मतलब खेल हो जाएगा. ऐसा खेल करना मुश्किल है इसमें. मतलब हो तो सकता है, कैसे भी हो सकता है. वी हैव सीन दैट इन पिलेट्रो. बट I think we are here to rely more on data than the speculation. And I think if we are relying on data, we are going to win 7 or 8 out of 10 times. And if we are relying on the speculation, we are just going to win 3 times or max 4 times. तो उसमें losing probability ज्यादा होता है speculation में. तो I feel I'm a person to go more with the data. तो मुझे data के हिसाब से तो avoid ही लगता है ये. Got it. Yeah. So we have covered the second last company, Agarwal Glasses as well. Now we'll move to one last company. Sorry, we are running slightly short on time. But we'll cover this in hopefully in the next 10 minutes. This is a very interesting issue. I found it very interesting. The company's name is Nisys Finance Services. It's a very complicated IPO. I didn't want to take it, but then these two gave it to me. If I talk about the company offers financial services such as transaction advisory services, fund and asset management, private equity and venture capital to corporate clients. In terms of the details of the IPO, it's a 114 CR IPO. 114 crore का IPO है. 101 CR is fresh issue. It's coming at a market cap of 430 CR. FY24 financials revenue is 42 CR and PAT is 23 CR. So very high PAT, bottom line heavy industry per se. And in terms of the BRLM, LM is Beeline. So Beeline is one of the very good, used to be a very good reputed LM. Of late, there have been some issues with respect to some of the companies it has brought, but Nisys Finance should comfortably sail through. Having said that, let me now go ahead and build a understanding of what Nisys Finance does per se. So as I said, high level details done. Promoter will still hold 73% after IPO, so which should be good. And the market cap of the company is like 430 CR after listing. So it's a big size SME IPO, 114 crore. The company acts as an advisor to institutions and semi-institutions, i.e. the HNIs of the world, on focusing on the real estate and infrastructure sector. So essentially, whenever there are deals happening on the real estate side, on the infrastructure side, the company earns through transaction advisory fees. As in, think of it this way, that there's a builder who wants some capital but is unable to secure that capital, and then there's another builder who has extra capital and is looking for land parcels. So what this company will do is this will come in and make them meet the two, and then probably say that instead of doing just this one project, you also do these 4 projects with this client. So that way the client 1 has capital for the next 4 projects, and then client 2 who had extra capital is able to deploy that capital, and on that it company earns a transaction advisory fees that it was able to manage the transaction. And like what it also does is it also writes small checks in that capital. तो जब वो capital बोला कि ये 4 project बनाएंगे, it also writes small checks in that capital through the NBFC and the AIF it manages through its multiple subsidiaries, step down subsidiaries and associate companies. So it has like 4 funds under it, through which it also writes small checks. So the idea is to grow on the second part and also continue on the transaction advisory side. So that's what the company does at a very high level. अगर मैं प्रमोटर की बात करूं, प्रमोटर अमित गोइंका is an industry veteran. I really like this experience. He has like 25 years of work ex and has worked with subject matter expert companies in this field like Knight Frank in their real estate investment banking. He was the head for them. And then he also worked for SL Groups
NBFC, investment banking on real estate side. He also has worked with EY. So a very eloquent and a well-spoken person, and was able to build on his vision very well. And if I talk about where the company makes most of its revenue from, so as I said, the company makes most of the revenue from transaction advisory. So transaction advisory से 70% revenue आता है, और उसके अलावा जो AMC asset management charges है उससे 20% of revenue आता है, जो कि बेसिकली सो ऐसा होता है कि जैसा मैंने बताया कि कंपनी क्या करती है, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी तो मैंने समझा दिया. बेसिकली कंपनी helps with different deals. These can be like what should be the price of a property. If a company wants to co-build a project with someone else, then they will be the one who will manage all of that. And then what they also have is a NBFC and a AIF sort, which essentially on which they earn a fee. The fee is essentially fixed fee every year, that whatever is the per AUM, asset under management, you get a 2% of that as a fee. So that is the second part, which is the revenue from which they make. So MC constitutes to 20% of their revenue, and remaining 10% of their FY24 revenue has came from interest income, sale of investment, etc. So they have a current AUM of 1,000 crores, which is not huge. Like 1,000 crores ka AUM is like, when you think about the scale of the operations, it seems like too high, but it isn't per se. So the current AUM is 1,000 CR, and they have 3 offices right now, one in Bombay, one in Gift City, and one in Dubai. But the promoter mentioned that they have the goal of taking the AUM of their subsidiaries to $1 billion in the next 4 years in the interview. So it definitely seems that he has a very good vision going forward, where he wants to 8x the company in the next 4 years. So 8x, not the company, the AUM side. So AUM जो है वो 20% of revenue है company का. So AUM should increase if they are able to do what they are saying they will do per se. So अब मैं बताऊं कि जैसे कंपनी बोल क्या रही है. So as I said, 101 CR का fresh issue, out of which 12.5 CR will be used for licenses and setting up new funds in Gandhinagar, in Mauritius, in Dubai. तो उससे क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन, सेमी इंस्टीट्यूशन है, इनके पैसे बाहर के रियल एस्टेट फंड्स वगैरह में लगा पाएंगे, तो वहां पे उनको फंड सेटअप करना है. सिमिलरली बाहर के लोगों का पैसा यहाँ से लगा पाएंगे. सो उसके लिए जो फंड सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए वन टाइम कैपेक्स करना है कंपनी को, क्योंकि लाइसेंस मिल जाएंगे, फिर वो परपेचुअली यूज हो सकते हैं. 36 CR कंपनीज रेजिंग फॉर एजेंट एंड प्लेसमेंट फीस, क्योंकि अब ये जो फंड बना देंगे तो उनके लिए अमाउंट भी चाहिए होगा, राइट. तो अमाउंट क्या है, बेसिकली एआईएफ में जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये लोग इन्वेस्टर ढूंढेंगे, तो बीच में इन्वेस्टर्स के बीच में ना डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं जो कि इन्वेस्टर ढूंढ के लाते हैं. सो इनको 1% देना पड़ता है जब वो लेके आते हैं. सो उसके लिए इनको 36 CR चाहिए. सो थिंक ऑफ व्हाट आई सेड, राइट, द प्रमोटर वांट्स टू से दैट ही वांट्स टू टेक इट द फंड टू 1 billion. So he'll have to pay some distributor fees. So that is where 36 CR they are raising for, and then 35 CR they are raising for their NBFC, remaining for GCP. So if I talk about it, the company has done well over the last few years, क्योंकि कई सारे पॉलिसी चेंजेस आए गवर्नमेंट के, जैसे रेरा आया, इंसॉल्वेंसी एंड इन बैंक्रप्सी कोड आया, जीएसटी आया, गिफ्ट सिटी वाली जो रेगुलेशंस आई, तो क्या है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो रियल एस्टेट फोकस डेवलपमेंट फंड्स वगैरह होते हैं, वो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में थ्रू local partners. These are the local partners who have been doing this for 16 years. The promoter has 16 years of work, so although this specific company has started showing revenue over the last 3 years only. So this local know-how is something which is very knowledgeable and should be definitely used. But think of it like उनका current AUM वगैरह जो है वो इतना ज्यादा नहीं है. Almost all of it is a future story, growth story. The current, almost all of their income is coming from transaction advisory. So one risk which I feel is कि वो transaction advisory क्या है, consulting business है, कि like think of it as a brokerage business, कि तुमको यहाँ से फ्लैट जमीन चाहिए थी, कैपिटल चाहिए था, सामने वाले के पास कैपिटल है, उसके पास जमीन नहीं है, तो तुमने दोनों को जोड़ के बीच का एक फीस ले लिया, राइट. सो दैट कैन कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. कंसल्टिंग बिजनेसेस के साथ यही होता है कि दे you can't give an insanely high PE to them, and they can't continue to grow forever. Like they will reach a cap. So 70% of that is from consulting business. So it needs to be seen how that would grow. उसके अलावा any policy change, since the company operates in a highly regulated environment, any policy change would be a negative for the company. So that's something which needs to be kept in mind कि अगर tax वगैरह का कुछ change हो गया तो लोग might not invest in AIFs.
उसके अलावा जो मेच्योर क्लाइंट है इनके इंस्टीट्यूशंस, वो भी हो सकता है कि अपने खुद की एडवाइजरी करने लगे, या फिर जस्ट मोर कंपटीशन कैन कम अप दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिस्क फॉर द कंपनी. So again, like if I talk about the financials, the company made 23 CR on a 42 CR revenue in FY24. So you will see almost like 50% of the revenue was converted to PAT, because it's a very asset high light model, very high operational leverage. Like they are able to manage for the last 4 years with 18 to 24 employees. That's the strength of their company per se. So a lot of it is converted, and this is a big jump from FY23 when they had done 11 CR revenue and 3 CR PAT, and almost all the jump is coming from your transaction advisory, as I said. नाउ वन थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट इज कि अब फर्स्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कम हो गया है. फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक ट्रांजेक्शन एडवाइजरी FY24 में 23 सी आता, फर्स्ट क्वार्टर में इट्स लाइक 4.85 सी, समथिंग लाइक दैट. सो विच हैज डीग्रोन, बट देन लाइक रेवेन्यू को ऊपर दिखाने के लिए कंपनी ने क्या किया, उनके पास डिबेंचर पड़े हुए थे, वो बेच दिए उस साल, ताकि उनका रेवेन्यू की ग्रोथ दिखती रहे. लाइक फर्स्ट क्वार्टर में भी यू विल सी दैट इन, एज आई सेड, FY24 में दे हैव डन 42 CR, एंड देन इफ यू सी FY25 का फर्स्ट क्वार्टर द रेवेन्यू इज 15 CR, but out of that 15 CR, 4.4 is actually coming from sale of debentures. So that's something which is probably one time, right? Because they don't have any इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिबेंचर्स. उनकी बैलेंस शीट पे 22 CR का ही डिबेंचर्स है, जिनमें से अब 18 बचे. सो अगेन it seems like, again, my issue, or like my one thing with these companies is like, although the promoter, I heard his interview, seems very genuine, but it is easy if a person is so financially literate and works in this industry to be able to say the right things and get away with it. So again, that needs to be seen per se. But yeah, if I talk about just the revenue, 23 CR PAT है इनका, so on those financials, the company is coming in at 429 CR, which is a 18 PE, which I think has priced in well. But since this is a novel sector and this will continue to grow as you have more infrastructure funds entering India, wanting to work with the local players, this should continue to grow. Because of this, this may enjoy, like, let's say a 25 PE, I feel. But again, there are no listed peers. So very difficult to say. This is first of a kind of a company which is getting listed. And इसको ट्रेडिशनल पीबी बेसिस पे भी नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि एनबीएफसी उसका बहुत ही छोटा पार्ट है कंपनी का, एंड उसका पीबी नहीं देख सकते. अगर आप नेटवर्थ कंपनी की देखोगे, सो इट विल प्रोबेबली बी रॉन्ग टू से एज वेल. सो अगेन, दैट्स विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी, बट एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग गेन्स, आई थिंक दिस इज अ वेरी नोवेल बिजनेस. दिस शुड बी लाइक, दिस शुड डू वेल. And Beeline is also the LM, so that should also So we are work not in able positive for the company. Arey yaar, I can hear, I can say. So Beeline is the LM for the company. So that's with respect to the company. And the so this is a proxy play to India infrastructure development and the IFSC story. What I will do is that I will apply to this company and then see, probably after listing, if I get some allotment, I'll keep, but I'll not make a big position. I would want to see over the next few years, how is it increasing its AUM, and how is the transaction advisory services income trending. Basis that I'll take if I want to take a big position or not, but at least for IPO, I will apply. It seems like a good story, and the promoter seemed very, very genuine and knew what he was saying. So that is with respect to this company, Nisys Finance. Tanmay, are you able to hear me now? I think there's some issue. Let me just quickly check. Yes, also I can't see online. If you guys can hear me, just please post it in the chat. Post any comment saying that you guys can hear me, and then we can continue. Hey Tanmay, you are breaking up. So yeah, so it seems that Tanmay is breaking up while others can hear me. So that is with respect to the last issue. Thankfully, we have almost covered all the issues. Closing, I would probably still apply to Nisys Finance and Ganesh Infra, and avoid the Agarwal Glass company and
Suraksha Diagnostics. Tanmay, now that you can hear me, anything that you have in terms of the closing comments, or we can probably end the space after that? Tanmay, can you hear me? Okay, in that case, we have already covered everything that we had to. Thank you so much for everyone for joining. We'll upload this on YouTube as well. So just want to highlight that if you have missed any of the issue and haven't listened to it, you can definitely follow the YouTube channel, the link to which is in the pinned comments above. Go ahead and follow the channel. I will probably post this space there in the next half an hour or an hour. And I also post all the companies' spaces of the past 4 months there as well. So if you haven't missed anything, you can listen to your IPOs at your own leisure. But yeah, with that, thank you so much everyone for joining. Have a good day ahead.